डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th 10th 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द टॉपिक इज़ न्यूरॉन, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो आइए इस टॉपिक पे हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के कितने मेजर पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से न्यूरॉन जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज़ तैयार कर रखा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमसीक्यू सीरीज़ में हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? ऑप्शन ए ब्रेन, बी न्यूरॉन, सी स्पाइनल कार्ड, डी एक्सॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, that is neuron is the basic unit of nervous system. Question number 2, which part of the neuron receives signals? A axon, B dendrite, C synapse, D soma. So the correct answer is option B, that is dendrites. Next question, question number 3, the long part of neuron that transmits signals. Option A axon, B dendrite, C synapse, D myelin. Correct answer is option A, axon is the long part of the neuron. Question number 4, which part of the neuron contains the nucleus? Option A axon, B soma, C dendrite, D synapse. Correct answer is option B, cyton, which is also known as soma. Question 5, covering of axon which increases signal speed. Option A myelin, B synapse, C dendrite, D soma. Correct answer is option A, myelin sheath. Next question, question number 6, what is the gap between two neurons called? Option A soma, B synapse, C axon, D myelin. Correct answer is option B, synapse. Now moves to next question, question number 7. The myelin sheath of neuron is produced by option A swan cells, B oligodendrocyte, C axons, D both A and B. Correct answer is option D, that is swan cells and oligodendrocyte. Now moves to question number 8. The part of neuron responsible for metabolic activity is option A cyton, B axon, C dendrite, D myelin sheath. Correct answer is option A, that is cyton. Question 9. The insulating material around the axon called? Option A synapse, B myelin, C neurotransmitter, D cytoplasm. Correct answer is option B, that is myelin. Now moves to next question, question number 10. Which part of the neuron stores neurotransmitters? Option A axon, B dendrite, C synaptic vesicles, D nucleus. Correct answer is option C, that is synaptic vesicles. Next question, the neurotransmitter acetylcholine is primarily involved in option A muscle contraction, B mood regulation, C pain, D visual. So the correct answer is option A, muscle contraction. Next question, that is question number 12. The part of neuron that releases neurotransmitters into the synapse. Option A dendrite, B axon terminal, C soma, D axon hillock. Option B is the correct answer, that is axon terminal. Question number 13. The gap between two adjacent myelin sheath is called? Option A node of Ranvier, B axon, C synapse, D axon. So the correct answer is option A, node of Ranvier. Question number 14. Nacelles granules are found in which part of the neuron? Option A cell body, B axon, C dendrites, D myelin. So the correct answer is option A, that is cell
body. Thanks for watching.